Yeah. Let's say I want to pass an array to a, let's say usually what we do, I have this particular array. This is traditional array. This is how we create an array directly with the values 10, 20, 40. I it and it accepts and this method job is to just print the content of the array. Have integer I and say print one. This is a simple job of this particular method. Now this is a traditional array. Then traditional array, you have created the array and you have assigned some value. What is anonymous array? Let me explain that. So I create an array on this spot. This thing is called as anonymous array. Array without name, array which is created without name. Yes. This is passed as the argument or this is written the output called as anonymous. Now there is one more concept called as jagged array. Can anyone tell me is jagged array? What is jagged array concept? So we have seen this in multi-dimensional arrays. We have array of array, and there yes, it is nothing but an multi-dimensional array. And there, if you see here, I have multiple arrays. One, this is the first array. Inside the array, now I have array with multiple sub arrays. So this is called as jagged array. Jagged array, it is an multi-dimensional array which contains different size, different sizes, different size सब array. तब उसके जो elements का जो size है, तो इसका size है 4, 3, 5. Now, how do I print the content of this particular array using traditional array? Traditional for loop? Can you tell me? So one for loop I will need for the rows tracking. Row, another will be for the columns. I will take a row. How many rows will be there? Array dot length. This loop will run how many? 3 times. Now for every iteration, it will again go column wise, column second column. So this column, this will for the column. Column will start from 0. And how many columns? So whatever the row we have, whatever the row, array of row dot, so that row 0, row 2, row 1 like this, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2 like this. So for the first time, this loop will run for 4 times. For the second iteration, this loop will run for 3 times. For the third iteration, this loop will run for 5 times.
I will print the content like this array of row and column. Well, this is the traditional way. All the elements can take new line also. One, two, three. Now, how do I print this using for each loop? इससे बहुत simple है आपका. For each, and we have each iteration we get a temp array from the given. So we have pool of arrays, and each iteration we get one array, and from that array we are going to get the temp element. So given. So from one array, from array of array we get one array, and from that one array we get one by one, one by one. I hope you are aware of this. I assume that you are aware of this because ये already देखा है. What is enhanced for loop and what is? अगर आपको ऑपरेशन बस रीड करना है तो इनहांस फॉर लूप इज द बेस्ट. यहाँ पर ज़्यादा कोड लिखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कोड लिखेंगे. ठीक. What the idea? What is anonymous array? What is jacked array? Clear है? Now there is one operator we have not covered yet. What is that? Do you remember this ellipsis operator? Anyone knows what is ellipsis operator? Dot dot wala. This is nothing but a ellipsis operator. Ellipsis operator is nothing but your dot dot. But what is the actual use of? Now this operator is very much useful. Now if you want to share a variable number of input, example, now I call a method addition of two numbers 10 and now I create a method public static int method name is accepts numbers in for one for returns for 1 plus. Now I am not sure how many numbers I am going to give input, but this method will work only for two inputs. This method will work only for two inputs. So I want to make this method such that whatever the number of inputs you want to pass, let's say I want to pass 30 or 40. This method is not working. What we can do? Can you tell me what we can do? Later. Now I am not sure how many inputs user might give. So I want that whatever the number of inputs user is giving, let's say one दे सकता है, दो दे सकता है, तीन, 100, whatever it is. Our method should. So what we can do? See here, I used three dots. I used three dots. So three dots का मतलब क्या होता है? This is the input. This is the input.
How many inputs are there? 4 inputs are there, and all the inputs are stored inside the. Now, can you tell me, if we want to store multiple values, you want to store multiple values, what is the option? You have to create that many number of variables. So can you tell me, int a कितने सारे वेरिएबल्स, कितने सारी वैल्यू स्टोर कर सकता है? एक इंटीजर वैल्यू, एक वेरिएबल, एक ही। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो इनपुट है, दिस इज टेक्निकली, इंटरनली इट इज क्रिएटिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स। क्या क्रिएट करता है? एरे ऑफ इंटीजर्स। तो आपको क्या करना है? सिंपली सम रिटर्न करना है उनका, राइट? एडिशन। तो एडिशन के लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और आप एक सिंपल सा फॉर लूप लिखो, जहाँ पर मिलेगा आपको टेम्प और ये मिलेगा इनपुट। आपको मिल क्या रहा है? एक एरे। एरे में से ये सारी जो भी इनपुट्स दे रहे हो आप, 10 20 30 40, दे आर स्टोर्ड इनसाइड द इनपुट, एंड दैट इनपुट इज एक्टिंग एज अ एरे ऑफ इंटीजर। और उस लूप को हम चलाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे एडिशन प्लस इक्वल टू, और फाइनली हम रिटर्न करेंगे। अभी इस बार मैं दे रहा हूँ 2 इनपुट, नेक्स्ट टाइम दूंगा इस केसेस में। आप जितने सारे इनपुट दोगे चल जाएगा। मेथड इज ओनली वन, method is only one, but we are able to work with different. This is also very much useful is for this idea. What is ellipsis operator? So ellipsis operator is used to make the method dynamic. So if you want to make the method accept any number of variable number of inputs, then the, what is ellipsis operator? Ellipsis operator is the operator which is accept variable number of inputs, right? And internally, how the variable number of inputs are stored? They are stored using, अभी यहाँ पर इंटरनली क्या क्रिएट होता है? एरे। व्हाट इज हैपनिंग? इट इज क्रिएटिंग एन एरे। जो भी इनपुट यहाँ पर अभी ये लिखा है, मतलब इसका मतलब ये बन गया आपका एरे। अभी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं लिख सकता, बिकॉज दिस विल बिकम एरे। वहां पर पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरे पास करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई व्हाट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स आर पास्ड, दिस ऑपरेटर व्हाट इट डज, कन्वर्ट्स एन एरे। Every operator, as we know, it accepts some input and generates some kind of output. इसको input है, ये सारे input variables है, और उसका output क्या है? Creating an, it is output is, so it will accept any number of values and it will generate uh, output, और हम उसी array के elements iterate कर रहे हैं। Clear है? Clear? Okay. Now there is one more concept. There is one more operator. Anyone remembers what is the operator we are pending with? There is one more operator. Do you remember instance of operator? There is one more in our checklist. What is that? Instance of operator. हमने यहाँ पर देखा था operators. यहाँ पर कुछ operators थे, यहाँ पर हमने नहीं देखा उसको. Fine. कौन से operators हैं वो? Ellipsis operator we have covered. Now instance of operator. This is what we have to look into. So ellipsis operator we have covered. Now we'll talk about of operator. What this operator does? One thing is also very useful. So I have two classes, class product, and I have another class called as student. Now I create object of new product, and I store that using product or obj. Can we do this? Can we do this? Can we do this? Yes.
Of course, we can do that. There is no problem in this. Why? Object class is a super class. So what we are doing actually, we are holding child class object using parent class reference. What we are doing? We are holding child class object with the help of parent class. Can we do this? Yes or no? Now, अब मुझे क्या करना है? अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट चेक करना है. अभी किसी को ये ऑब्जेक्ट पास करोगे आप. लेट्स से मैं प्रिंट करने वाला हूँ. प्रिंट मेथड है मेरे पास और आप उससे पास करने को ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वन एक बार और ऑब्जेक्ट. आई विल क्रिएट अ मेथड कॉल्ड एज प्रिंट. उसका काम क्या है? एक्सेप्ट करना ओबीजे. क्या काम है उसका? ऑब्जेक्ट प्रिंट करना. अभी मुझे यहाँ पर एक सिंपल है. अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट टाइप का है तो वहां पर प्रिंट करना है इट्स अ प्रोडक्ट. और अगर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टाइप का तो मुझे प्रिंट करना है इट्स अ स्टूडेंट. कैसे प्रिंट करोगे आप? इट्स प्रोडक्ट इट्स. कौन सा कब प्रिंट? तो अगर दिस ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है इज इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, देन ओनली वी आर गोइंग टू. भी देखो यहाँ पर इफ obj1 is of type product, if it is of type product, then I am going to print its product. And if it is of type, if obj is of type is instance of type student, then we would print its a. What the idea? What is the use? अभी इसको देख के समझ में आएगा कि इस ऑब्जेक्ट को देख के. So how are you going to check that? अभी आपका ऑब्जेक्ट आने वाला है. इस ऑब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है. प्रोडक्ट आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, मूवी आ सकता है, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें आ. तो आपका काम क्या है? अगर वो ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है तो स्टूडेंट प्रिंट करो. अगर प्रोडक्ट है तो what is instance of operator is doing? So instance of operator returns true or false. Instance of operator returns true or false. So when it will return true if the specified reference is of type given class type. मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट जो भी रेफरेंस है, this reference if it is of type product it will return true, otherwise it will return false. If this obj is of type reference student, then it will return true, otherwise it is going to return false. So instance of operator returns true or false. When it is going to return true, it will return true when the given specified reference is matching, is of type specified class name. इसका है तभी रिटर्न करेगा ट्रू. सी है. लेट मी रन दिस. यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू और यहाँ पर रिटर्न होगा दोनों करेक्ट है ना. हमने दो ऑब्जेक्ट भेजे, हमने दो बार मेथड कॉल किया राइट. प्रिंट मेथड एक ही बार कॉल करो. मैंने पास कौन सा ऑब्जेक्ट किया? bj1. तो प्रिंट क्या होगा? बस इट्स प्रोडक्ट. इट्स यहाँ पर obj2 पास करूँ तो प्रिंट होगा बस क्लियर है. So what instance of operators? Tell me if someone wants to explain me what is instance doing. So instance of operator returns true or false. When it returns true, if the specified reference is of given type, then it returns true. If the given the reference is not of the specified type, कौन सा specified type? इसके type का नहीं तो return करेगा false. Right? अब मैं इसे थोड़ा डिबग करके आपको बताता हूँ, so you will understand better.
फिर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फिट। नाउ ओबीजे ओबीजे स्टॉप 5 यहाँ पर देखो इवेल्युएट कर रहा हूँ। ओबीजे इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स। रिटर्न हो रहा है, आ रहा है कब रिटर्न ट्रू कब रिटर्न फॉल्स रिटर्न। क्लियर।